uh, dealing with ionic product, ionic compounds. ठीक है, it specifically applies to ionic compounds. So for example, you have a salt which is NaCl. NaCl का lattice होता है, ठीक है? It's Na plus one attracted to Cl minus one, which is then again attracted to Na plus one, which is then again attracted to Cl minus one. So there's this. So let's assume that this is a tiny crystal of NaCl. Actual crystal mein there'll be thousands of sodium ions and thousands of Cl ions, and they would all be ionically bonded to each other. What happens when you try to dissolve it? Let's say this is your solvent. तो आप vigorously stir करते हो, and when you stir it, the lattice dissociates. ठीक है, all the ions they go flying off in different directions. जब आप चम्मच चलाते हो, ठीक है, in water, the ions they scatter. और बीच में जितने भी ionic bonds होते हैं, they all break. And तो sodium ion कहीं और चला गया, Cl minus one ions and sodium ions, they've all scattered in the solvent, and the solvent is usually water. So lots and lots of water molecules they they surround these ions. Now there's a limit to how much ions can be scattered. You can keep on dissolving, and there would be more and more sodium ions and Cl ions. Okay, you keep adding salt, there's more and more sodium ions and Cl ions that would be in the solution, but up to a certain point, at a certain point, it's going to become saturated, which means that beyond that point, you've added so many Cl ions and so many sodium ions into the solution that they start to recombine and they start to form the lattice back again. The only thing that was keeping them dissolved was that there were lots of water molecules in between, so the water molecules were keeping the ions away from each other. But if you add too many of them, the ions would be so close to each other that they would start to form the crystal, like this sodium and this Cl ion. They might form the crystal back again. So the reverse process would start, which is crystallization. At saturation point, crystals would start forming again because the ions are so close together that they would start to recombine and they would start forming the lattice back again. So what's happening is an equilibrium gets established. Like you have NaCl solid, you're trying to dissolve NaCl solid and it dissolves to form sodium ions aqueous and Cl minus one ions aqueous. But at saturation point, the reverse is also happening because the solution has so many ions that those ions are combining to form the lattice back again. So there's going to be a reversible reaction, but only if the solution is saturated. Okay? Otherwise, there's not going to be a reversible reaction. Otherwise, it's only going to dissolve. But at saturation point, the reverse reaction also starts to happen. And at that point, no further solute would dissolve. I mean, it would dissolve. You can keep on dissolving NaCl, more Na plus one and Cl ions would dissolve, but because there's so many ions, they would combine together to form the lattice back again. So both forward and backward reaction would be taking place. Is this clear to everyone? So far, Risha, is this clear? Riba, Jameen, Qasim? Yes or no? Is this clear? ठीक. अच्छा, so Yes, sir. ठीक है. अच्छा, so any ionic compound, if it's a saturated solution, it would be in equilibrium. And if it's in equilibrium, then it's obviously going to have an equilibrium constant, which is going to be products over reactants, TK, and that's called Ksp. ठीक है, एक तो ये याद रखना कि it's always for a saturated solution. So there's going to be a Ksp, which is products over reactant, sodium ion concentration into Cl ion concentration divided by NaCl solid concentration.
And we've already discussed previously that solids की जो concentration होती है, that's constant. ठीक है, it's either taken as one or simply it's a constant. ठीक है, तो this NaCl solid, वो जो expression होगा उसको, ठीक है, this NaCl solid, उसको उस मतलब ये पहले Kc था, ठीक है, this was actually equilibrium constant Kc, लेकिन वो NaCl solid को आप उसके साथ मिला देते हो, and that's then referred to as Ksp. मतलब NaCl solid basically simple words पे आप NaCl solid लिखते नहीं हो, ठीक है, this is called your Ksp and it's simply the वो जो सोल्यूशन में आयंस है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स आप NaCl solid because it's a constant, तो आप उसको उस constant के साथ मिला देते हो. Solids have constant concentration, so you don't write that in the expression, that's it. And that's how you write the Ksp expression. और हर दफा Ksp का expression different होगा depending on the salt. For example, you have aluminum carbonate. So aluminum carbonate solid is going to dissolve, dissociate if you mix it in water, plus aqueous. So it's going to produce 2 aluminum ions and 3 carbonate ions, all in aqueous state. So aluminum carbonate dissolving, and the Ksp expression for this would be products divided by reactants नहीं होगा, reactant solid है, that's उसकी concentration 1 होगी, so it would be aluminum ion concentration, and that's going to be squared into carbonate ion concentration, and that's going to be cubed. And this is going to be your Ksp expression. So every time the expression is going to be different depending on the salt that's being dissolved, depending on how many ions are produced when it dissociates. NaCl में एक ही Na और एक ही Cl बन रहा था, तो it was Na ion concentration into Cl ion concentration. Aluminum carbonate में there are a lot more ions being produced when it dissolves, so it was aluminum ion concentration squared into carbonate ion concentration cubed. Similarly, you would be asked to find the unit for Ksp as well. For example, in this case, in the first one, it's concentration multiplied by concentration, so it's mole per dm cube squared, TK, which is going to be mole squared dm minus 6. इस केस में it would be concentration squared into concentration cubed, so end result would be mole per dm cube to the power 5. And your expression, your unit for Ksp would be mole 5 dm minus 15. So that's how you write Ksp expression, and that's how you write the unit for Ksp. Okay, let's just do one more. K, let's say FeCl2 solid that's being dissolved, and in a saturated solution it would form Fe2 plus and 2Cl minus 1 aqueous. तो इसका Ksp का expression जो होगा, that's going to be, it's going to be Fe2 plus concentration into Cl ion concentration squared. और फिर इसका unit होगा mole per dm cube
It's concentration into concentration squared, so it would be क्यूब हो जाएगा. So mole 3 दिए -9. अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सारों को? ये सुनो, फजान, इज दिस क्लियर? बाकियों को भी इज दिस क्लियर? क्लियर. ठीक है. अच्छा, अगला काम है कि अब केएसपी एक्सप्रेशन आ गए. यू हैव टू फाइंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केएसपी. ठीक है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, वैल्यू ऑफ केएसपी, यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड इट. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू solubility is usually referred to in terms of, and in most questions, the convention is solubility is usually given in grams per cm cube, or sometimes in dm cube as well, gram per dm cube. So solubility is usually in grams per cm cube. For example, they might say that NaCl की सैचुरेटेड सोल्यूशन, रिमेंबर सोल्यूशन सैचुरेटेड है, ठीक है, उसी के ऊपर ये केएसपी वगैरह अप्लाई होगा. फॉर एग्जांपल NaCl की ना सॉलिबिलिटी मेंशन है, and they've given you that it's 5 gram per cm cube. अब इशू ये कि हम जो है हम डील करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के अंदर. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लर्न इज हाउ टू कन्वर्ट, मतलब अगर सॉलिबिलिटी गिवन है ना ग्राम्स पर सीएम क्यूब में, हाउ डू यू कन्वर्ट दैट इनटू मोल पर डीएम क्यूब. सो व्हाट यू डू इज इट्स 5 grams per 1 centimeter cube, राइट? तो इसको मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है, और इस नीचे वाले को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है. तो मास को मोल में किसका कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय एमआर. ठीक है, NaCl की एमआर से डिवाइड कर लो. 5 ग्राम है तो 5 डिवाइड बाय एमआर वुड बी मोल्स. और नीचे जो डिनोमिनेटर है सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, यू डिवाइड बाय 1000. तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी दैट वुड बी इन मोल पर डीएम क्यूब. ठीक है, कन्वेंशन ये कि वो हमेशा उन्होंने ग्राम पर सीएम क्यूब में यूजली दी होगी. अच्छी बात होगी अगर नहीं दी हुई, अगर उन्हें डायरेक्टली मोल पर डीएम क्यूब में दी हुई है. बट यूजली solubility is in gram per cm cube. और उसको, क्योंकि हमने जब केएसपी हमने कैलकुलेट करना है, केएसपी के अंदर तो हम कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं, तो इट शुड बी इन मोल पर डीएम क्यूब. तो रिमेंबर दिस कन्वर्जन. तो इसका हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि किसा करेंगे कि 5 would be divided by the MR of NaCl which is 58.5, और नीचे क्या उसे डिवाइड बाय 1000 करना है, यानी वो 1 टाइम्स 10⁻³ हो जाएगा नीचे. और इसको अगर सॉल्व करें, लेट मी क्विकली. सो 5 डिवाइड बाय कितना है? 58.5. अच्छा, उसके बाद जो आंसर शुड बी डिवाइड बाय, व्हाट हैपेंड है? अच्छा, इट शुड बी डिवाइड बाय 1000. नहीं, नहीं, नॉट डिवाइड बाय 1000, ये 10⁻³ ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा. अच्छा, सॉरी, ये मैंने ना काफी वो मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यू ली थी. 5 ग्राम पर सीएम की बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं. मतलब इतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी कभी भी नहीं होती किसी चीज की. इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. लेट्स से 0.005 ग्राम पर सीएम क्यूब. ठीक है, अब कोई सेंसिबल वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि एक सीएम क्यूब में 5 ग्राम तो बहुत ज्यादा
solubility है. अच्छा, so it's 0.005 divided by 58.5 and into 1000. So 0.08547. So 0.08547 mole per dm cube. अच्छा, that's usually the first thing that you should do. ठीक है कि उसे ग्राम पर सीएम क्यूब या ग्राम पर डीएम क्यूब में सॉलिबिलिटी दी हुई होगी, तो उस सॉलिबिलिटी को कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है. ठीक है, रिमेंबर हाउ टू डू दैट. मतलब ऊपर मास होती है, उसको एम से डिवाइड कर लो, मोल हो जाएंगे. नीचे अगर सेम क्यूब है तो उसको डिवाइड बाय 1000 करो, डीएम क्यूब बन जाएगा. ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू एंड यू विल गेट द solubility that's given getting converted into mole per dm cube. अच्छा, आगे चलते हैं. इसका करना क्या है, solubility का मतलब क्या है? Remember, solubility is that amount of salt that has already dissolved and dissociated. So sodium ions and Cl ions, aqueous. अच्छा, solubility is वो अमाउंट जो एक्चुअली डिसॉल्व हो चुकी है सोल्यूशन के अंदर. तो इफ 0.08547 मोल per dm cube is getting dissolved, तो वो कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा? It's 1:1, so it's going to be 0.08547 mole per dm cube, and this one would also be 0.08547 mole per dm cube. ठीक है, both of them. तो ये याद रखना, solubility वो अमाउंट है जो एक्चुअली डिसॉल्व हो चुकी है. ठीक है, so you have in a saturated solution you have the concentration. Simply Ksp के expression के अंदर इन values को put करो. It's going to be sodium ion concentration into Cl-1 ion concentration, or 0.08547 into 0.08547. ठीक है, उसको तो बस 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, you'll get the value of Ksp. 0.08547 and you square it, it comes out to be 0.0073. और जीरो था मेरे ख्याल से. मोल स्क्वायर्ड dm minus x. That's the unit for Ksp. So remember कि solubility को convert कर लेना मोल per dm cube में, and this is how you find Ksp. And and the other thing is कि जो Ksp की वैल्यू होती है, what information does that provide to you? तो remember कि Ksp अगर लार्ज है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, सोल्यूशन में आयंस ज्यादा है. तो Ksp large means indicates that the salt is very soluble. ठीक है, so Ksp large means the salt is very soluble, and if Ksp is small, that indicates that the salt is not very soluble. So the salt is not going to be very soluble. खैर, इधर NaCl की जो solubility Ksp की वैल्यू आ रही है काफ़ी छोटी आ रही है. वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज ली थी. तो जस्ट इग्नोर दैट. NaCl बहुत soluble होता है, तो उसकी Ksp की वैल्यू काफ़ी बड़ी आएगी रियलिटी के अंदर. ठीक है, these are just made up values.
अच्छा, is this clear to everyone? Dua, is this clear? Fatma, Rian? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट एक और इस थोड़ा सा ज़्यादा इस NaCl तो आसान था. एल्यूमिनियम क्लोराइड कर लेते हैं. तो लेट्स से एल्यूमिनियम क्लोराइड की ना solubility given है, and it's given as 0.025 ग्राम per cm क्यूब सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर. और उन्होंने क्या इसकी इसकी Ksp की वैल्यू निकालो. तो सबसे पहले तो इसको मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करो, तो इट वुड बी 0.025 ग्राम्स ओवर के 1 cm क्यूब. अच्छा, ऊपर वाले को एमआर से डिवाइड कर लो. AlCl3 की एमआर क्या होगी? इट वुड बी 27 प्लस 3Cl है तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, और नीचे उसे डिवाइड बाय 1000 कर लो, तो 10⁻³ हो जाएगा, या सिंपली वो ऊपर आके 1000 हो जाएगा. ठीक है, सो बल्कि इसको इधर ही शो कर लेते हैं, डिवाइड बाय 1000, तो वो डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा. अच्छा, एनीवेज, लेट्स डू दिस कैलकुलेशन. इट्स क्या हो गया, एक सेकेंड. 0.025 डिवाइड बाय 27 plus 35.5 times 3, and then the whole thing multiplies by 1000, 0.187. अच्छा, end result आ रहा है 0.187 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. अच्छा, ये आ गया AlCl3 की solubility. ये वो AlCl3 है which in a saturated solution has gone into the solution. तो AlCl3 अगर डिसोसिएट होगा solution में, it would form 3Cl-1 ions. अच्छा, ये वैसे AlCl3 का एग्जाम्पल मैंने गलत थोड़ा सा दिया हुआ है. अज्यूम करो AlCl3 डिजोल्व कर रहा है, क्योंकि अगर AS का याद है, AlCl3 पानी के अंदर जाके पानी के साथ रिएक्ट कर जाता था और प्रेसिपिटेट फॉर्म करता था और एसिडिक सोल्यूशन फॉर्म करता था. खैर, अभी इग्नोर करो कि जस्ट अज्यूम के AlCl3, लेट्स अज्यूम पानी के साथ सिर्फ डिजोल्व हो रहा है. अच्छा, सो यू हैव Al3 प्लस एंड 3Cl-1, तो कितना डिजोल्व हो रहा है? 0.187 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. तो आगे जाके वो डिसोसिएट होकर आयंस बना रहा है. तो एल्यूमिनियम आयंस एग्जैक्टली सेम अमाउंट बनेंगे, 0.187 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. लेकिन Cl आयंस की क्वांटिटी 3 टाइम्स ज्यादा होगी. ठीक है, बिकॉज 1 AlCl3 if it ionizes and dissociates in water, mixes in water, it produces 3Cl ions. तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 3 टाइम्स ज्यादा होगी, 0.187 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगी. And your Ksp expression for this would be aluminum ion concentration multiplied by the Cl-1 concentration, but that's going to be cubed. And if we put in the values, aluminum ions की concentration क्या थी? It's this 1.187. और Cl ions की concentration जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है. So it's 0.187 times 3, and then it's going to be cubed. ठीक है, so that is what is going to give you your answer. It's going to be, तो क्या 0.187 को एक तो क्यूब करो और
फिर दिस थिंग मल्टीप्लाइज बाय, नहीं सॉरी 0.187 को पहले इंटू 3 करना है और फिर क्यूब होगा एंड देन दिस थिंग मल्टीप्लाइज बाय 0.187 तो 0.033. So I'm getting 0.0330 मोल पर यूनिट. क्या होगा इसका? इसका यूनिट होगा कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन क्यूब, यानी x इंटू एक्स टू द पावर 3 तो x टू द पावर 4 हो जाएगा. तो मोल पर डीएम क्यूब पावर 4, तो मोल 4 और डीएम माइनस 3 पावर 4 क्या होगा? 12. That is what the unit is going to be. ठीक है, so that basically sums up one type of question. ये बस ख्याल रखना कि जब कॉन्सेंट्रेशन सॉलिबिलिटी को आप कन्वर्ट करोगे कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, तो वो कॉन्सेंट्रेशन होगी जो एक्चुअली डिसॉल्व कर रही है. तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है LCl3 का, इट वुड प्रोड्यूस 3 टाइम्स द Cl आयंस, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स ज्यादा होगी. तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl आयन वुड बी 3 टाइम्स ग्रेटर. क्लियर है ये? यस और नो? अहमद क्लियर है? अरीबा, दुआ, शमीन? अच्छा, now the next type of question, that is the opposite. कि उसके अंदर what happens is कि KSP की वैल्यू गिवन होगी. You don't have to calculate KSP. You have to do the opposite. Find solubility. ठीक है ना? It's the reverse. So you have to find KSP is given and you have to find the solubility of the salt. Asha, how do you do this? Okay, for example, you're given AgCl, or KSP of AgCl is given as, it's given as 0.0052 mole per dm cube, mole squared dm minus 6. So that's the value of KSP for AgCl that's given. तो आप क्या करोगे? आप करोगे कि आप AgCl का पहले वो एक्सप्रेशन लिख लो कि AgCl सॉलिड है, उसको पानी के अंदर मिक्स किया, it would dissociate, it would form two ions. One is Ag plus 1, the other one was Cl minus 1. ठीक है, so you're getting these two ions, Ag plus 1 and Cl minus 1. And the expression for KSP for AgCl would be एक ion है तो बस Ag plus 1 concentration into Cl minus 1 concentration. ठीक है, that's it. अब इशू ये कि how do you find the solubility? So what you're going to do is कि आप assume करोगे कि जी x मोल per dm cube डिसॉल्व हो गए AgCl के. ठीक है, that's the assumption. तो x मोल per dm cube अगर डिसॉल्व होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, तो सिल्वर आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे? x मोल per dm cube. एंड Cl आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे? x मोल per dm cube. ठीक है, सेम रेशियो, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस 1 Ag plus 1 ion, 1 Cl minus 1 ion. तो अगर x मोल per dm cube डिसॉल्व होते हैं इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस x of this and x of this. तो आपको दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई है सॉल्यूशन के अंदर इन टर्म्स ऑफ x. तो KSP की वैल्यू दी हुई थी, कितनी थी? 0.0052. तो ये x मोल पर डीएम क्यूब है, ये भी x मोल पर डीएम क्यूब है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा. एंड यू कैन इजीली फाइंड वाला x स्क्वायर, तो 0.0052 का अंडर रूट लेना एंड यू गोइंग टू फाइंड x. तो इसका
0.0052 under root. Just 1 second. It gives me 0.0721. So I'm getting 0.0. एक ही जीरो है, एक सेकेंड, एक ही जीरो, 0.0721 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा क्योंकि ये तो x was the solubility. ठीक है, तो इस तरीके से खैर मैं उसको मोल पर डीएम क्यूब में ही रख रहा हूँ. सो यू गेट x. तो बस सिंपली क्या करना है कि आपने सॉलिबिलिटी अज्यूम करनी है x एंड यू सॉल्व फॉर इट. थोड़ा सा इससे ज्यादा मुश्किल बस क्वेश्चन कर लेते हैं कि अच्छा, लेट्स से we're talking about the solubility of MgCl2 और Ksp की वैल्यू गिवन है. वो गिवन है 2.0 into 10 is per minus 2. ठीक है, let's assume that's given. इसका यूनिट क्या होता है Ksp का? इस केस में it would be mole 3 minus 9. So this is provided और solubility निकालनी है. So MgCl2 is solid and उसको you mix it in water, aqueous, and it ends up forming two ions. One is Mg2 plus, the other one is Cl minus 1. अच्छा, ये aqueous ions फॉर्म हो रहे हैं. अब ये करना है कि क्या सॉलिबिलिटी है. ठीक है, दैट्स अननोन. तो वो x मोल पर डीएम क्यूब हो गया कि x मोल per dm cube are dissolving in a saturated solution. तो Mg ions 1:1 है, so it's going to be x mole per decimeter cube. लेकिन Cl ions दो प्रोड्यूस होंगे. If one MgCl2 dissolves, two Cl ions are produced. तो अगर x mole per dm cube dissolve होंगे तो the concentration of Cl ions would be double that. It's going to be 2x mole per decimeter cube. And you have to now तो आपके पास दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आ गई in terms of x. ठीक है, Cl ions की कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी. And then you write the expression for Ksp. The Ksp expression would be Mg2 plus concentration into Cl ion concentration, लेकिन वो स्क्वायर होगा. ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में 2 Cl ions है. The Ksp value is already known. It's 2 times 10 power minus कितना है 2. The Mg ion concentration is x. The Cl ion concentration is 2x. So we write this down and then we try and solve for x. तो ये कितना हो जाएगा? It would be 4x cubed. एंड बस 4 इधर ले आओ और फिर इस पूरी चीज का क्यूब रूट कर लो. सो यू विल गेट x. ठीक है, सो रिमेंबर दिस कि आप अज्यूम करोगे x मोल पर डीएम क्यूब डिसॉल्व हो रहा है, सॉलिबिलिटी है. तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1:1 है, तो x मोल पर डीएम क्यूब होगी. इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी, ट्वाइस होगी, 2x मोल पर डीएम क्यूब. एंड द अदर थिंग इज कि जब एक्सप्रेशन के अंदर पुट करोगे तो Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन x है. Cl ion की कॉन्सेंट्रेशन इज कमिंग आउट टू बी 2x. तो वो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन में स्क्वायर्ड है. And then you solve for x. So if we do this, क्या आएगा? 2 into 10 power minus 2 divided by 4, and the whole thing has to be उसका cube root.
second. So it comes out to be 0.171. So X comes out to be 0.171 mole per decimeter cube. Okay, that's the value that we are getting. अच्छा, so is this clear? दोनों types of question. Hasan, is this clear? Riyan, Shameen. Yes, sir. Clear. अच्छा, so ठीक है. We have 10 minutes. ठीक है, तो ये दो questions. I'm giving you two questions. Sir? Yes. Yeah, why is Cl2x whole square? See, first thing, we are assuming that MgCl2 solubility is x mole per dm cube. ठीक है, तो अगर वो Sir, dissolve I होता है, can't hear a word you're saying. can you hear me now? I'm going to refresh. Give me a second. This isn't कासिम, working. Okay. कासिम आवाज आ रही है? हेलो, बाकियों को आ रही है आवाज क्लियर? Yes, sir. कासिम, Yeah, sir. हाँ आवाज आ रही है अब? मेरे headphones गिरे हुए थे. Sorry about that. अच्छा, वो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि दिस इज MgCl2 डिसॉल्विंग, राइट? तो अब हमारे पास solubility, you can hear me properly, right? Yes. अच्छा, so the solubility of MgCl2 हमने assume की कि x mole per dm cube saturated solution के अंदर dissolve हो जाता है. तो mg ions 1:1 है, क्योंकि वन मॉलिक्यूल डिसॉल्व वन mg ions, तो x मोल पर dm क्यूब अगर डिसॉल्व हो रहे हैं तो x मोल पर dm क्यूब mg ions प्रोड्यूस होंगे, और Cl ions की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो डबल होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दो Cl ions प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, तो Cl ion की पहले बात है कॉन्सेंट्रेशन 2x मोल पर dm क्यूब होगी. ठीक है, नाउ ठीक है. व्हेन यू राइट द एक्सप्रेशन किस तरह होता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये जो कोएफिशिएंट होता है दैट बिकम्स द पावर, राइट? तो द एक्सप्रेशन वुड बी mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl ion कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर्ड हो जाएगा ना, राइट? Right. अच्छा, अब फिर इसके अंदर इस एक्सप्रेशन के अंदर व्हाट यू नीड टू पुट इन, आई मीन कॉन्सेंट्रेशन पुट इन करनी है ना. तो mg ions की कॉन्सेंट्रेशन x मोल पर dm क्यूब है, Cl ion की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2x मोल पर dm क्यूब है. तो स्क्वायर्ड तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ Ksp उसने स्क्वायर्ड ही होना था. तो दैट्स वेयर द स्क्वायर इज कमिंग फ्रॉम. और Cl ions की कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर करना था, Cl ions की कॉन्सेंट्रेशन 2x मोल पर dm क्यूब है, तो वो स्क्वायर हो जाएगी. ठीक है, sir. कासिम क्लियर है? Yeah. तो ठीक है, I'm giving you two questions now. ये मैं उधर उस पर पोस्ट भी कर रहा हूँ. ठीक है, जस्ट टू क्वेश्चंस देख के अंदर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Ksp. ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम कार्बोनेट है. अच्छा, इसकी सॉलिबिलिटी गिवन है. Solubility is given as 0.00 इतना ज़्यादा जीरो नहीं, 18 ग्राम per cm cube. ठीक है, that's given. और इसका केस भी निकालो. Second one, you're given कोई salt FeCl3. ठीक है, that's provided. और इसका क्या गिवन है, इसका केस भी गिवन है. That's given as 0.0
लेट्स से 018, एक तो 18 क्यों किए जा रहा हूँ, 12 कर लेते हैं। अच्छा 0.012, इसका केएसपी का यूनिट क्या होगा? मोल 4 डीएम नहीं, मोल 4 डीएम -16 नहीं, -12. अच्छा, so KSP is given and you have to find the solubility. ठीक है, ये आज करना है, दोनों टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, आई एम पोस्टिंग दिस, सारे प्रेजेंट लिख लो, इन दो क्वेश्चंस को कॉपी भी कर लो। आई एम पोस्टिंग दिस एज एन असाइनमेंट। ठीक है, छोटी सी असाइनमेंट है। अच्छा, एवरीवन राइट प्रेजेंट, कोई क्वेश्चन है पूछ लो। ये कॉपी कर लो। ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ। प्रेजेंट लिखने के बाद यू कैन लीव द, यू आर अलाउड टू लीव द क्लास। मैं बस ये क्लासरूम के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सर ये कब तक करना है? आज कर दो तो बेहतर है, तो दो छोटे ओके से सर। क्वेश्चन।